हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूज़फुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम एंड मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहिए। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आज जो हम सीखने वाले हैं वो है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जो इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है उसको हम कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे उसको समघात में बनाते हैं। उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ मेरे पास जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस का, इक्वेशन आपको कुछ इस फॉर्म में होती है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो फर्स्ट टर्म जो है दोनों, वो तो 1 डिग्री की है आपकी यहाँ पर, लेकिन जो सी वाली कांस्टेंट टर्म है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस नहीं होने पा रही देने हो दे रही है। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करने के लिए रिड्यूसिबल मेथड यूज करेंगे। कैसे हम इनको रिड्यूस करें? तो यहाँ पे 3 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 में आपके पास a अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी डैश होगा। टाइप 2 में a अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन बी डैश होगा। और टाइप 3 में तीनों ही इक्वल हो जाएंगे, a अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन बी डैश इक्वल टू सी अपॉन सी डैश। तो सबसे पहले हम टाइप 1 को देखेंगे। जब a अपॉन ए डैश इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी डैश हो तो हमारे स्टेप में पहला स्टेप है हम पुट करेंगे स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस k इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएशन में आता है स्मॉल डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी एक्स प्लस जीरो जीरो एच का जो कांस्टेंट है उसका जीरो हो जाएगा। ऐसे ही y का हो जाता है डी वाई इक्वल टू कैपिटल डी वाई प्लस जीरो। तो स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन जो है आपको यूज कर लेने हैं मेन डिफरेंशियल इक्वेशन में, और वहां से आपको कलेक्ट करनी है एच के और कांस्टेंट वाली टर्म को। तो उससे एक इक्वेशन मिलेगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, उसको इक्वल टू जीरो रखेंगे और एच और के लिए सॉल्व कर देंगे। और जब आप एच के और कांस्टेंट वाली टर्म को जीरो मान लेंगे तो बाकी की जो बची हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी कैसी हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स में। उसको आप सॉल्व कर लेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। और फर्स्ट फिफ्थ स्टेप है एट लास्ट वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई अलोंग विद द वैल्यू ऑफ एच एंड के। एच और के की वैल्यू को यूज करते हुए हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को रिड्यूस कर देंगे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की टर्म में। स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री। तो स्टूडेंट, आप यहाँ देख पा रहे हैं आपका जो a अपॉन ए डैश का वैल्यू है वो है 1/2, और b अपॉन बी डैश का जो वैल्यू है वो है हमारा 2/1। यू कैन सी दैट इज बोथ नॉट इक्वल। सो दिस इज ऑफ टाइप 1। टाइप 1 में हमारा सब्स्टिट्यूशन रहता है स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k। एंड जो स्मॉल dy ओवर dx का वैल्यू होगा होगा कैपिटल dy over capital dx. Using this in the given equation, we are having here dy over dx is equal to capital X plus h plus 2 capital Y plus k and minus 3. And at the denominator, same thing, capital X plus h and capital Y plus k and minus 3 is there also. So we separate h, k and the constant term and rest of the equation 2y. So this is h plus 2k minus 3 and 2x plus y plus 2h plus k minus 3। सो स्टूडेंट, यहाँ जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको जो होमोजीनियस नहीं होने दे रहा है वो ये वाला पार्ट है। तो हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं और इनको सॉल्व आउट करके साइड बाय साइड हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एच और के की। तो मैं ये यहाँ पे कर लेती हूँ। मैंने पुट किया है एच प्लस टू के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड टू एच
plus k minus 3 equal to 0. Solving these two equation, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको 2 टाइम करके यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो माइनस का 3k एंड 2 टाइम किया और सब्सट्रैक्ट किया 6 प्लस का 6 एंड माइनस का 3, तो प्लस 3 इक्वल टू 0। के का वैल्यू स्टूडेंट 1 आ गया और ऐसे ही के का वैल्यू यहाँ रख लिया हमने किसी भी इक्वेशन में। तो के का वैल्यू एच का वैल्यू के का वैल्यू 1 रखने पर एच का वैल्यू भी हमारा 1 आ रहा है। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को 0 रख लिया है, तो हमारी इक्वेशन होमोजीनियस हो जाती है x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y। यहाँ पर आप साइड में मेंशन कर सकते हैं कि अब आपकी इक्वेशन कैसी हो चुकी है, होमोजीनियस हो चुकी है। अब आप इसको होमोजीनियस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको y बाय x वाली फॉर्म में लाना है फंक्शन को। तो x का डिवाइड कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 2y बाय x एंड 2 प्लस y ओवर x dy ओवर dx। सो वही सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे हम हमारा, जो हम होमोजीनियस में हमेशा यूज करते हैं। y बराबर vx, differentiating we get dy over dx is equal to v plus x dv over dx. Using this in the main equation, we get v plus x dv over dx is equal to 1 plus 2v and 2 plus v. Simplifying, v को right hand side पे लेके गए, x dv over dx equal to 1 plus 2v upon 2 plus v minus v। एलसीएम लेके सॉल्व आउट कर लेते हैं इसे। 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। 2v and 2v get cancelled and वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर इजीली सेपरेट हो रहे हैं। 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx ओवर x। इंटीग्रेट कर सकते हैं हम दोनों तरफ को। तो यहाँ पर मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है, वहां आपका पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न यूज में आ रहा है, तो उसको आंशिक भिन्न में ब्रेक करेंगे। डिनोमिनेटर को 1 माइनस वी स्क्वायर को मैंने लिखा है 1 प्लस वी एंड 1 माइनस वी कंसिडर करेंगे a अपॉन 1 माइनस वी प्लस b अपॉन 1 प्लस वी। और इसको जब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये हो जाता है 1 प्लस वी और प्लस b इंटू 1 माइनस वी। when we use when v equal to 1, then we get a equal to 3 by 2. When we take v equal to minus 1, we get value of b as half. So हमारा जो मेन इंटीग्रेशन है उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट कर देते हैं टर्म्स को। तो यहाँ पर आपकी जो टर्म्स है वो हो जाती है a, दैट मीन्स 3 by 2 dv अपॉन 1 माइनस v एंड प्लस 1 by 2 dv अपॉन 1 प्लस v इक्वल टू कैपिटल dx अपॉन x। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमको नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख जाएगा, v का डिफरेंशिएशन माइनस dv। अगर हम इसको दो बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दे ताकि हम इजीली डिनोमिनेटर का लॉग ले सके इंटीग्रेशन में। और सेकंड इंटीग्रेशन में तो आपको v का डिफरेंशिएशन dv ऊपर दिख ही रहा है। ये हो जाता है लॉग 1 प्लस वी इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन निकाल दिया और प्रॉपर्टीज यूज की है। लॉग की जो आपकी डिजिट है वो पावर में चली जाती है। लॉग 1 माइनस वी का क्यूब कर लिया और यहाँ से 2 हम कॉमन निकाल रहे हैं। लॉग हो जाता है 1 प्लस वी एंड जो 2 है वो हमने राइट हैंड साइड में दे दिया और राइट हैंड साइड में भी प्रॉपर्टी यूज कर ली लॉग एम प्लस लॉग एन, दैट इज लॉग एम एन। ओके, एंड ये माइनस का था, आपने माइनस सिंबल यही करना है। और लॉग एम प्लस लॉग माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी रहती है लॉग एम अपॉन लॉग एन एंड लॉग डिजिट यहाँ पे भी पावर में जा सकती है लॉग एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एंड
लॉग इजीली कैंसिल कर लिया हमने दोनों तरफ का, और v की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, y अपॉन एक्स, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। सो स्टूडेंट यहाँ हमने सब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें सब्सटीट्यूट करना है। हमने जो कंसीडर किया था स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, तो कैपिटल एक्स का वैल्यू होगा एक्स माइनस वन, क्योंकि एच का वैल्यू हमने वन निकाला था, और ऐसे ही कैपिटल वाई होगा वाई माइनस वन, तो वो भी सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर वन प्लस वाई माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस वाई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल पावर थ्री इक्वल टू हो जाता है हमारे पास एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एंड तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है एक्स प्लस वाई माइनस टू एंड we times the denominator here x minus 1 whole power 2 into c square into x minus y whole cube and to be divided by x minus 1 whole square. This get cancelled here. So student, this is your final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 6x माइनस 2y माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 6। यहाँ पर अगर हम a अपॉन a डैश का वैल्यू देखते हैं तो दैट इज 6 ओवर 2 3 एंड b ओवर b डैश इज नेगेटिव 2 ओवर 3, बोथ आर नॉट इक्वल। So this is of type 1. So we use the usual procedure here. We are substituting small x is equal to capital X plus h and small y equal to capital Y plus k, and dy over dx is equal to capital dy over dx. स्टूडेंट वैसे ही आपको सेपरेट करना है इन द टर्म्स ऑफ h के, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, प्रोसेस को रिपीट नहीं कर रही हूँ। dy ओवर dx, तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 6x माइनस 2y and plus 6h minus 2k minus 7, and similarly at the bottom 2x plus 3y plus 2h plus 3k minus 6। तो यहाँ पे आपने h के और कांस्टेंट वाली टर्म को जो हमने सेपरेट किया था जैसे पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही हमने सेपरेट कर लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने फाइंड आउट करना है h और k का वैल्यू। इसको मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व आउट कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने सॉल्व आउट करने के लिए आपकी इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को जीरो के इक्वल में पुट कर लिया है, और सेकेंड इक्वेशन को मैं डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई किया जब मैंने यहाँ पे 6h प्लस 9k माइनस 18 इक्वल टू 0, सब्सट्रैक्टिंग दीज टू, यहाँ पे हमारे पास h और h गेट कैंसिल, माइनस 11k and we are getting here plus 11 as well equal to 0. The value of k is equal to 1. Value of k we can substitute in any of this equation. So when we are substituting in this first one, minus 2 minus 7 equal to 0, 6h is equal to 9, h would be equal to 3 by 2. So these are the values of h and k we use at the end. So what we are having, your homogeneous differential equation reduces to dy over dx is equal to 6x minus 2y upon 2x plus 3y. For the putting it into the standard form, we are dividing both numerator and denominator with the x. So we are having here 3 by 2, sorry, 3y over x. So you can directly substitute y equal to vx, that makes it dy over dx is equal to v plus x dv over dx. It's capital X here. So v plus, so our main equation become v plus
x dv over dx is equal to 6 minus 2v upon 2 plus 3v, and when we simplify by taking v to the right hand side, this is equal to x dv over dx equal to 6 minus 2v upon 2 plus 3v minus v. Take the LCM and simplify. Minus 2v, and that would be minus 3v square upon 2 plus 3v. So when simplifying, we get 6 minus 4v minus 3v square upon 2 plus 3v. वेरिएबल सेपरेशन कर देते हैं. 2 plus 3v upon 6 minus 4v minus 3v square dv equal to dx upon. So here we are taking the negative symbol common from the denominator and giving it to the right hand side. Negative dx over dx, this will become 3v square plus 4v minus 6 here. You can see from here the differentiation of denominator we are having here 6v plus 4. If you times it with the 2 and multiply with the divide with the 2, you will get the differentiation of denominator at the numerator. So we can take the logarithm of denominator in the integration. So here we are having half of log 3v square plus 4v minus 6 equal to log c. I'm adding as a constant of integration and negative log x in the divide, and 2 we are timesing it with the right hand side. 3, this would be using the value of y and x, v as in the terms of y and x. This is equal to log c upon x, and the power 2 makes it c square x square, and you can easily eliminate the log from both the side, and we are using the value of h and k. Student, we get the value of h as 3 by 2 and k as 1. So using k is equal to 1. So we are using it here in to reducing y minus 1 whole power 2 upon x minus 3 by 2 square plus 4 y minus 1 upon x minus 3 by 2 and negative 6 equal to c square upon x square, that is x negative 3 by 2 square. On the simplifying, we are having here 3 y minus 1 square plus 4 y minus 1 and x minus 3 by 2 minus 6 times with the x minus 3 by 2 whole square equal to c. Instead of c square, we are taking another constant c dash. Student, this is your final answer, and further you can simplify these terms by using a minus b square formula and cancel out the terms. So this could be stop here as well. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका जो टाइप है टाइप 2 को लेते हैं. टाइप 2 में हमारे पास क्या है, जब अपना a अपॉन a डैश का वैल्यू b अपॉन b डैश के इक्वल हो और 1 बाई m सपोज टू बी हो कोई वैल्यू, तो हमारा जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ जाता है, dy ओवर dx. यहाँ से हम a डैश की प्लेस पे यूज कर रहे हैं. वैल्यू ऑफ a डैश वुड बी ma
m ax plus by. M is taken common from that. So there would be one common factor in the numerator and denominator as well. So we need to take that common factor ax plus by as we substitute this one. So how to do this one? Let's check out with the example. Here is my example. Dy over dx is equal to x plus y plus 1 upon 2x plus 2y plus 3. So student, you can check from here. A upon a dash is 1 over 2 and b upon b dash is uh, also 1 over 2. Both are equal. So this is of type 2. So we are checking for the common factor. Let's see what happened. You can take 2 common from these two terms and you get the common term in the numerator and denominator as well. So our substitution is that common term v, and differentiating with respect to x, we are having 1 plus dy by dx is equal to dv over dx. So value of dy over dx is equal to dv over dx minus 1. Using in the given equation 1 here. So dv over dx minus 1 equal to v plus 1 upon 2v plus 3, simplifying by taking it to the negative 1 to the right hand side, v plus 1 and plus 2v plus 3, simplifying by taking the LCM here, 2v plus 3, and what we are getting, dv over dx would be equal to 3v plus 4 over 2v plus 3. So you can easily separate the variable here. Dv equal to dx. Taking 2 common from the left hand side, this is here 2v plus 3 by 2, 3v plus 4 dv equal to dx, and timesing it with the 2 as well here. 3 as dividing and timesing it with the 3, 2 by 3. This is 3v and plus 9 by 2, 3v plus 4 dv equal to dx, and here we are using splitting 9 as a 4.5. So this integration break down into the two part, 3v plus 4 plus half and 3v plus 4 dv equal to dx. And if you separate from here, this first integration would become only this 3v plus 4 and 3v plus 4 at the denominator get cancelled here. And next term is 2 by 3 times with the half, that makes 1/3 dv over 3v plus 4 equal to dx. On integrating, we get 2 over 3v plus 1 by 3. Differentiation of denominator you can see here. If you times and divide it with the 3, so this would become here 1 by 9 log of 3v plus 4 equal to x v plus c. We are taking constant of integration here. Lastly, we substitute the value of v here, 2 over 3 x plus y plus 1 by 9 log 3 x plus 3y plus 4 equal to x plus c. Student, this is your final answer here. So next we take the type 3. In the type 3, we are having when a upon a dash is equal to b upon b dash is equal to c upon c dash equal to m. So what happened when we substitute the value of a as m times with the a dash, and that m commons from the
numerator and the rest of the term will become same, so it easily get cancelled out, and we are having a simple differential equation dy equal to mdx. You can easily get the solution y equal to mx plus c. So स्टूडेंट, मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. Give your answer in the comment box. My question is that find the solution of this following differential equation: dy over dx equal to x minus y minus 2 upon 2x minus 2y minus 3. Student, here are the options. You can check it out. And आपको कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने के लिए वो भी पता है मुझे. And thank you. Thanks for watching.